Hello, welcome to Chandrashree's Healthy Kitchen. Friends, today we are going to make one dish which is a Maharashtrian recipe which is pithla bhakri. So come on, let's go. Ingredients: this is besan, onions, coriander, curry patta, chilies, green chilies, kokum, some rock salt, and this is onion and lemon just to eat with the recipes. लगा लेना है अपन को and इसमें थोड़ा ऑयल डालना है, ठीक है. On the other hand, बेसन में थोड़ा सा पानी मिलाया है और अपन इसको स्टर करेंगे. इसे पतला बनाना है. हमें ये देखना है कि थोड़े भी ग्राइंड्स ना हो, तब तक पानी डाल के स्टर करें. तो हमें गैस के ऊपर हाथ रख के देखना है कि ऑयल गर्म हुआ है. तो ऑयल गर्म होने के बाद उसमें ज़रा सा राई डालना है, 1 स्पून जीरा. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हींग डालना है. देख सकते हैं ऐसे हो रहा है. फ्रेग्रेंस भी आने लगेगा. इसके बाद हमें अनियंस डालना है. ग्रीन चिली इसको अच्छे से मिक्स करें. after that we have to put some curry patta, तो हमें जो अनियन है वो पिंक होने देना है, ज़्यादा लाल भी नहीं होना है. हल्दी डालनी है. एंड जो अपन ने स्टर किया था बेसन वो डालना है. एंड इसको हिलाते रहना है जब तक वो थिक कंसिस्टेंट पेस्ट की तरह ना हो जाए. इसमें हम पानी डाल रहे हैं. और थोड़ा सा रॉक सॉल्ट.
salt is very good for health rather than white salt. Onion is taken and we have taken thick paste for it. So pithla is ready and we have to garnish it with coriander leaves. Ready to eat. So this is kanda and meandu to eat with this pithla and bhakri. Thank you so much guys for watching. Do like, share and subscribe for healthy recipes, and make sure you hit the bell icon for notifications. Thank you.